Yes, Tarif, tell me. Yeah, so I have done the method of operation and the chemical properties. You have done method of preparation. Shahid, what about you? Shahid, what about you? Shahid, I hope I am audible. Shaviz, आप बताएं. Did you make a sheet for all of these? Method of preparation, chemical properties. Sorry, what Shaviz? So no, like yesterday I was in my guest, so I couldn't. Today I'll start. You will start by today. Okay. Okay, so please see that यही आपका revision हो जाएगा हाल वाल के हाल पूरे chapter का. ठीक है. Even if you once you are done with this, then if you look at अच्छा one more thing I forgot to mention is that I hope you will struggle a bit for conversions. Okay, organic conversions is a there are some questions on organic conversions, right? So for organic conversions, there are a few things that you should know. First of all, you should know completely what you should know. How to make structure from IUPAC name. IUPAC name and also common name. Common name will not be very much used in the haloalkane halorine chapter, but the common name in aldehyde ketone carboxylic acid, common name is very much used. Okay, so you should know some common name and also the IUPAC. For example, you should at least know the concepts of, for example, tertiary. For example, if I say third butyl fluoride, third butyl chloride. Okay, so this is a common name. So what does third butyl chloride means? It means a carbon atom contains chlorine. Now this carbon is tertiary. This is tertiary butyl and it contains how many carbon atoms? 4 carbon. So 4 carbon से आपको ऐसा carbon बनाना है which is going to be tertiary, and on that tertiary carbon you have to attach chlorine. Similarly, you can have secondary butyl chloride. So for this you are going to write 4 carbon atoms, and which is that carbon atom which is having 2 degree. So this carbon or this carbon, anywhere you attach chlorine. So this is secondary butyl chloride. So this type of nomenclature you should know, in not in the sense that you have to practice it in a separate way, but while you are doing some questions, so you will get tertiary. you will get tertiary butyl chloride. Then you will may flip some pages and see whether in the textbook they have given tertiary butyl chloride or not. Or you just Google what is tertiary butyl chloride, and slowly you are going to learn these things. Fine. Those who have done IUPAC nomenclature completely in 11th standard, they should know these things also, because if you were in 11th standard, then I have done all of these things. Not this 11th standard. For example, organic chemistry. So we did all of the nomenclature part. Subsequent. Then after subsequent, yes. Here you may see a few things. Example. You may have to find a few things, but yes. But in 11th standard, these things have been taught. For example, what is secondary, what is tertiary, all of these things. Okay. So what you should know for organic conversion is at least structure from IUPAC name. How to make a structure if you have been given a IUPAC name or a common name. The other thing that you should know is the reactions. For haloalkane halorine, you should know the MOP and the chemical properties. All of these reactions should be there in a sheet. Right now, it should be in a sheet at least. But after a while, for example, once you're done with this chapter, you have practiced all of the conversions. Then after that, what you need to do is this method of preparation chemical property should be there in your brain. Okay. Now, in order to
complete organic conversions, I will give you guys a video from the last batch. Jisme in a complete hour, I did all the conversions from this chapter, haloalkane halorine, and haloalkane halorine has approximately 28 conversions. Okay, so basically है तो शायद हमको लगता है 29 नहीं, I think 30 conversions हैं जिसमें से 2 repeated हैं. ठीक है, so basically you have 28 conversions only in organic haloalkane halorine. So that I have done in one video, in one complete lecture. I will send that lecture to all of you guys. उसको एक बार आप देख के उसका notes बना लीजिएगा please. That will help you in organic conversions. ठीक है, बस ये बात एक कहनी रह गई थी. और ये अगर प्रिपेयर नहीं है तो फिर कन्वर्जन होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. चलिए, in that lecture I have explained it in a very good way. I have shown you patterns also. Another thing that please don't pick up NCERT to do organic conversions. The reason being, the first question may be very easy. Sir. Second question will, tell me. Can you scroll up? Scroll up. नहीं, ये तो पुराना था ना जी, बताएं. Down. एक तो प्लीज स्पेस बार यूज करके ना बात किया करें, ठीक है. Yes. हाँ, प्लीज टर्न योर माइक ऑन प्रॉपरली, Yes, टर्न sir. योर माइक ऑफ प्रॉपरली. So I'm saying that don't pick up NCERT to do organic conversions, because first question will be very easy, second question is going to be very easy, the third question is going to be exponentially tough. Okay, so the order of question in NCERT is not very good. That is why in the video I have taken all the questions from NCERT itself, from the exercises, but they are in an order such that, for example, if I have first question and 10th question, right? First question and 10th question, they are quite similar. Then I have grouped them together. Okay. Or for example, in the first step, I have the conversion is in 2 steps. Or 10th जो सवाल है उसमें conversion 3 step है, but the starting 2 step is similar to the first question. तो उनको हमने एक के बाद एक रखा है. ठीक है. Once you start watching that video, but please watch that video with a pen and paper, with a pen and paper, so that you can practice also. Today we are going to start alcohol, phenols, and ethers. Please write the topic. And another thing is that please complete NCERT. Organic conversion के अलावा NCERT textbook आपका पूरा का पूरा complete रहना चाहिए. There are a few questions जो आपके doubt में आने चाहिए. ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो नहीं करते हैं, उनका डाउट आएगा ही नहीं वो वाला, तो उनका ऐसे ही चला जाएगा. There are a few questions that I want you to do. NCERT textbook में है, इस वजह से you do those NCERT textbook question. उसमें आपके पास कम से कम 2 सवाल ऐसे होंगे haloalkane halorine में जिसमें आपको डाउट आना चाहिए. अगर वो डाउट नहीं आया है किसी का, या तो आपने गूगल से देख कर लिया हो, अदरवाइज यू हैव नॉट डन दोस थिंग्स. ठीक है, तो आप प्लीज अब फोकस करें. haloalkane halorine is done, NCERT should be complete. ठीक है, चलिए. To start with alcohol, phenols, and ethers, I will start this chapter with IUPAC nomenclature, obviously, of alcohol, phenols, and ethers. So, actually, all of you know IUPAC nomenclature. Yes or no? Please tell me. किसी को दिक्कत नहीं होती ना? So write the question.
Please try these 4 questions. I'm giving you guys 3 minutes, and in 3 minutes you should at least give me answer of one of these questions. Okay, Rabah has given me an answer. What about others? Faiza, Madiha, Fahad, Tarif, Shahid, and Shavez. Yes, the first Please. Sorry, Shavez, what? one. First one, Eric. Yeah, send the answer in the chat. Chavez, one request is for you is please turn your mic on properly and mic off properly. 2 बार आपसे 10 बार आपसे पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं आप, है ना? Please don't press space bar while you are talking. आधी बात आती है, आधी बात नहीं आती. Send the answer in the chat then. What about others? Fahad? Zoom में भेजा आपने. Saveez, अच्छा ठीक है, चलिए सबका हिला हुआ है थोड़ा सा. चलिए सबका हिला हुआ है थोड़ा सा, चलिए ठीक है. That means I have to teach you guys IUPAC nomenclature also.
चलिए गाइस, जो भी लिखा आपने उसको फिर से दोबारा ट्राई करेंगे। अभी यहाँ पे लिखिए राइट द टॉपिक नॉमेनक्लेचर। This is obviously going to be a refresher type of thing. Now, many of you would not have seen this method, whatever I'm going to teach you guys right now for IUPAC nomenclature. So please note things down very carefully. And first of all, tell me, what is the first thing that you do when you are going to write the name of anything? If you are going to write the name of a compound, then what's the first thing you do? Tell me. रबा आप बताएं, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? Functional group. You check the functional group. उसके बाद Unsaturation. उसके बाद Parent. तो फिर आपने वैसे नाम क्यों नहीं लिखा है? आपने उससे नाम क्यों नहीं लिखा है? फिर फंक्शनल ग्रुप सबसे आखिरी में आता है ना, भूल गई हैं आप सब कुछ? See here guys, so we are going to use a method which is known as puff. So first of all, this is how we are going to write the name. First of all, I will write the substituent if there is any. Then I will write the parent P. Then I will write the unsaturation, which tells me about the presence or the absence of double bond. And after that, I'm going to write the functional group. Yes, we have substituent. For P, we have parent. For U, we have unsaturation. And for F, we have functional group. Now, what are the things which can be functional group? So in priority order, if you have COH group, COOH, that means this is carboxylic acid. Then for functional group, we are going to write, if COH is present, then we are going to write oic acid. Next, in the priority order, it comes ester. And for this, you are going to write O8. Next in the priority order is amide, which is CONH2. For this, we write amide. Next, we have nitrile, which is CN. If CN is present, tell me. This is priority table. Yes, correct. This is priority order. Okay. If we have functional group COH, then O8, then amide, then nitrile. And then we are going to write, if you have CHO, then you are going to write for functional group AL. And if you have C double bond O, which is attached to two different groups, then you are going to write ON, that means this is ketone group. Then comes my alcohol, which is OH. For this, we write all. And then comes my amine, NH2. And for NH2, we write amine only. Now, if none of these is present, whatever I have written here, please, one more thing I want to tell you guys, this is not the complete list of functional groups. Please understand that these are the functional groups that you are going to get most of the time. 95% of the time, you are going to get these functional group only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला है. There are many other group, acyl chloride वगैरह होता है, उसमें आपको नहीं देंगे, उतना ज़्यादा नहीं आता है. ठीक है. Now, if none of the above is present, then you are going to write, instead of functional group, you are going to write E, when none of the above. Is this clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Clear है? ठीक है. Now, let us suppose that if you have enough, let us suppose यहीं पे हम देख लेते हैं. अभी आप कुछ लिखिएगा मत.
For example, if you have something like this, then what is the functional group here? Tell me, guys. What is the functional group? What is the functional group? आवाज नहीं आई ठीक से, माइक ऑन करके बोले, स्पेस बार ना दबाएं प्लीज. हाँ, so what is this OH है ना? Br is not present. Br आपका functional group, at least in the context of IUPAC nomenclature, Br is not a functional group. Okay. Now tell me what is the functional group if we don't have Br but we have here C double bond O. What is the functional group now? Ketone. Ketone. ठीक है. But so for ketone what do we write? We write ONE. सबको बात समझ में आ रही है हाँ या ना? प्लीज बताएं. शावेद, शाहिद, आवाज नहीं आ रही आप लोग की, जवाब ही नहीं दे रहे आप लोग. शाहिद, शावेद, तारीफ. ठीक है. Let us suppose you have something like this. Now tell me what is the functional group? What is the functional group now? अरे बोलो भाई जल्दी. E. Yes. क्या हो जाएगा बताएं लोग. NO2 है यहाँ पे, बताइए. हाँ, NO2 नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा? E लिखेंगे. फंक्शनल ग्रुप की जगह क्या लिखेंगे? E लिखेंगे. चलिए. Now let us suppose if you have something like this. Now, what is the functional group? OH, and OH is present twice. That is why we can write dione. क्या लिखेंगे हम? Dione. Now, that means if you have more than one functional group of the same type, if you have more than one functional group of the same type, यानी कि एक से ज्यादा बार सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप अगर आ रहा है तो क्या यूज कर सकते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो यू राइट दैट हियर. If more than one functional group of same type then di, tri, tetra is used. Understood everyone? Yes or no? Please tell me. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए. Now, unsaturation, it tells you whether there is a double bond or no. If there is a triple bond, double bond, या फिर उनमें से कोई नहीं है. Now, if there is a double bond, then you will write it En. If there is a triple bond, then you will write it as Yn. ठीक है. Unsaturation में क्या लिखेंगे? Yn लिखेंगे. If there is none, then you are going to write An. Fine. Now, if there is, let us suppose, double bond also and there is a triple bond also, then what you are going to write? You are going to write E9. En for double bond and Yn for triple bond. If you, let us suppose you have two double bonds and one triple bond, then how many double bonds? Two. You will write di En, Yn. If you have one double bond and two triple bonds, then you are going to write En, di Yn. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. So समझ में आ गया सबको? we should write E, right? नहीं. आप देखिए ना, आप देखिए. ठीक है. डोंट वरी, डोंट वरी. जो भी दिक्कतें आएंगी, आपको लग रहा होगा ये मतलब सर आधा आधा लिखा है. प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. यहाँ पे भी आपको लगा होगा फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट बहुत छोटा हो गया, राइट शावेज? Yes. 11th स्टैंडर्ड में है ना, तो वो आप चिंता नहीं करिए. सारा आपका 95% जो है ना, सारे सवाल बन जाएंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ पेरेंट में आई होप दिस इज नॉट वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. अच्छा, यानी कि यहाँ पे भी व्हाट वी कैन यूज इन अनसैचुरेशन आल्सो वी कैन यूज डाई, ट्राई, टेट्रा. ठीक है. Now when I talk about parent, then meth is used when you have one carbon atom. Eth is used when you have two carbon atom. Prop is used when you have three carbon atom. Bute is used when you have four carbon atom. After that, pent is used when you have five carbon atom. Hex is used when you have. अब ये देखिए बहुत सारे लोग रहा सर पेंटेन ना होता है सर. नहीं, पेंटेन तो कंपाउंड हो जाएगा, राइट? बट इन पेंटेन सी देयर आर फ्यू पार्ट्स. पेंटेन को इफ यू आर गोइंग टू सी हियर, पेंटेन E represent that there is no functional group. An represent that means there is no double bond or triple bond, and pent represent that there are five carbon atoms.
All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. है ना? So 5 carbon atoms, it does not mean it is pentane, because pentane is a compound. 5 carbon atom, what does it signify? Pent. Okay, for hex for 6 carbon atoms, and so on. From here you are going to remember, if parent is a ring, then use cyclo as prefix. Cyclo as prefix. Okay. Now in subsequent, you have to remember a few things. For example, if you have NO2, then it is going to be nitro. If you have X, that means it is halo. For halo, you are going to have, अच्छा, fluoro generally हम भूल जाते हैं, UO होता है या OU होता है, UO होता है, ठीक है. So halogen में आपके पास क्या क्या हो सकता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, राइट. एक और अब आपके पास क्या है? R group. If you have R group attached, then it is going to be alkyl. Alk will be from number of carbon atoms. मान लीजिए, if it is substituent, you have 3 carbon atoms. तो वहां पे क्या लिखेगा? Prop लिखेगा, and then you will add YL to show that it is a substituent. ठीक है. तो इसमें हम एक एग्जांपल लिख देते हैं. For example, you have CH3. कितने कार्बन आटम है? 1 कार्बन. It means it is meth, and YL to show that it is a substituent, not the parent. Okay. Now similarly, you have OR. OR is alkoxy. Here also alk represents the number of carbon atom in the R group. Oxy is oxy. Now, for example, if you have OCH3, then this will be 1 carbon, so meth, oxy. And Sir, here also, जी बताएं. like what is the difference between substituent and functional group? What is the difference between Substituent and functional group. in the context of IUPAC nomenclature? Yes, yes. Okay, so substituent are only these. And with whatever is in the highest priority, that will be functional. Got it? यानी कि ये सारे क्या हो जाएंगे? All of these are going to be functional group if they are present. है ना? ठीक है, हो जाएगा, functional group हो जाएगा. ठीक है. Now substituent में please remember, now these are the substituent. ये तो आपके पास क्या होगा? These are the substituent which are not in the functional group list, right? These are the substituent which are not in the functional group list. But as you saw, if I take this example, here we have OH and here we have double bond O. Then now my functional group will become what? ON. Now OH will act as a substituent. Now when OH acts as a substituent, it will be named as hydroxy. ठीक है. तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी. I hope you know all of these things also from 11th standard कम से कम. C2H5? क्या रबा? What is C2H5? Is the functional group or a substituent? It is neither a functional group nor a substituent. It depends. ये तो functional group तो नहीं है first. It's not a functional group. Okay. Because in the functional group you can see that सिर्फ carbon hydrogen कहीं नहीं है. I don't know. सबा देखिए आप. Yes, sir. ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है. नाउ सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो राइट नाउ C2H5 को आप ये मान के चलिए इट इज दिस पार्ट, ये इतना फ्रैगमेंट है, सॉरी CH2 एंड CH3. ठीक है, ये इस तरह से इसको क्लब करके C2H5 लिखा हुआ है. ठीक है रबा? ओके सर. तो देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर यहाँ पे खत्म नहीं होता, यहाँ से भी शुरू हुई है IUPAC नॉमेनक्लेचर. ठीक है ना, यहाँ से भी शुरू हुई है IUPAC, यहाँ पे खत्म नहीं हुई है. क्या मतलब? आप मतलब ये है कि अब ये बताइए सर, पेरेंट चेन कौन होगा? आपने तो बोल दिया एक कार्बन को लिखा हो तो होगा नहीं वहां पे ये पेरेंट चेन हो, तो हमको चूज करना पड़ेगा. तो हाउ टू चूज अ पेरेंट कार्बन चेन, प्लीज सी हियर. बताइए तो पुराने लोग जरा बताएं, शाहिद, शावेज, आप लोग बताइए पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होता है? Longest. हाँ, यही भूल जाना है आप. ठीक है ना, those who remember that longest carbon chain is the parent, आपको वो भूल जाना है.
ठीक है, The functional group. हाँ वहां पे देखिए, प्लीज सी हियर गाइस, पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट चेन यानी कि पेरेंट चेन इज सेलेक्टेड। पहले तो कब सिलेक्ट करना पेरेंट चेन को? ओनली आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ओनली आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, only after identification of functional group and unsaturation. If you have not identified the functional group and unsaturation, you cannot select the parent chain. You will not select the parent chain. Okay? Why is that? Because parent chain should contain, parent chain should contain functional group. Yeah, it means the one of the carbon atoms inside the parent chain should contain the functional group, should contain the functional group. If there is no functional group, or if even if there is a functional group, then it should also contain double bond if any. अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड भी उसके अंदर रहना चाहिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड भी उसके अंदर रहना चाहिए. If you have a triple bond in the compound, then triple bond should also be there. If ये सारी चीजें खत्म हो जाए, सब में टाई आ जाए, तो फोर्थ वाला लास्ट वाला क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. आप यहाँ पे एग्जांपल से समझिएगा आप लोग, जो लोग अभी अभी प्लीज लिखना बंद कर दें, ठीक है, प्लीज लिखना बंद कर दें. फॉर एग्जांपल यू हैव समथिंग लाइक दिस. बहुत सारे बच्चे सबसे पहले इसको ले लेंगे पेरेंट चेन. शायद शाहिद एंड शावेज, जो लोग 11th हमसे नहीं पढ़ा है और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है पैक नोमेनक्लेचर का, यही लग रहा है ब्लू वाला लाइन होगा पेरेंट चेन, हाँ या ना? यस सर. लेकिन वो होगा नहीं. क्यों? हम लोगों ने क्या कहा? हमने एक बात कही थी, हमने ये अहद किया था कि वी आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन बिफोर फंक्शनल ग्रुप एंड अनसैचुरेशन. तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे? इट इज OH. ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई कर लिया, दैट मींस दिस कार्बन एटम शुड बी देयर. और तो डबल बॉन्ड वगैरह है नहीं. अब यहां से आप आगे बढ़े, अब यहां से आप आगे बढ़ने के बाद नाउ यू हैव टू वेज, राइट और लेफ्ट. सो नाउ यू आर गोइंग टू सी, कहीं डबल बॉन्ड है नहीं है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, तो फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में चले जाएंगे आप यहाँ पे इस तरह से. गॉट दिस? यस और नो? प्लीज टेल मी. और प्लीज लिसन, लेट अस सपोज ये भी नहीं होता आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड होता, तब आप क्या करते? You should start with here only. Functional group should be given the priority. First priority should be given to what? To the functional group. You started from here. You went here. Then you will look right, left and right. Is there any double bond? Double bond? Double bond? Yes, there is a double bond. So you will go that way. Even though this is what? Only 4 carbon atoms. And if I went in that side, I would have got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 carbon atoms. 5 है 6 है 5 है. ठीक है. So longest carbon chain is the biggest scam in the organic chemistry world. IUPAC nomenclature में सबसे बड़ा और सबसे पहला स्कैम आप लोग के साथ यही होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला. ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द लीस्ट प्रायोरिटी आपके लिए. अगर पेरेंट कार्बन होता था ना ऐसा, हाँ या ना बताएं आप लोग? 11th स्टैंडर्ड में आपने जो पेरेंट कार्बन चेन चूज किया, टीचर ने बोला नहीं यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप वाला होगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड चूज करेंगे, हाँ या ना बताएं? होता था नहीं होता था? है ना? तो उसी से बचने के लिए पहले यू विल आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, देन यू विल आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन एंड यू विल चूज अ फंक्शन. अच्छा, अब मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा होता, एंड हियर यू हैव ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड. सो यू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देके you'll go there, and now you have to see which is priority, double bond या triple bond. किसको प्रायोरिटी है? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी है, तो डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा. Understood this? Yes or no? Please tell me guys, all of you. Yes, sir. ठीक है, चलिए. Now next thing is, अगला जो आपका बड़ा इशू आता है नंबरिंग में आता है. किसमें आता है? नंबरिंग में आता है ना? तो नंबरिंग के लिए भी बिल्कुल सेम रूल है जो आपके पास पेरेंट चेन के लिए. प्लीज राइट हियर, नंबरिंग स्टार्ट्स
from that carbon atom, from that terminal carbon लिखेंगे, terminal carbon atom which is nearest to फर्स्ट प्रायोरिटी देना है किसको, फंक्शनल ग्रुप। सेकंड प्रायोरिटी देना है आपको डबल बॉन्ड। थर्ड प्रायोरिटी देना है आपने ट्रिपल बॉन्ड। फोर्थ प्रायोरिटी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं, अब सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, बिकॉज नंबरिंग तो सब्स्टिट्यूएंट वगैरह के बाद ही की जाती है, ठीक है ना। पेरेंट के साथ साथ नंबरिंग हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप लोग अगर सब्स्टिट्यूएंट के साथ अगर कहीं पे दिक्कत आए ना, तो आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट एंड आफ्टर दैट डू द नंबरिंग। यहाँ पे भी आप कुछ एग्जांपल देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया वर्ड है आपके सामने, टर्मिनल कार्बन एटम। टर्मिनल कार्बन एटम इज नथिंग बट द कार्बन एटम जिसके बाद कोई कार्बन नहीं। व्हाट इज टर्मिनल कार्बन एटम, टेल मी गाइस। द लास्ट कार्बन एटम। व्हाट इज द टर्मिनल कार्बन, टेल मी। लास्ट टर्मिनल कार्बन। लास्ट कार्बन। अब लास्ट कार्बन एक कंपाउंड में कितना होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, पांच होगा, कितना हो सकता है बताएं। How many last carbon can be there? How many terminal carbons can be there in a compound? जी फायजा, मदीहा। मदीहा की जवाब ही नहीं आ रहा। मदीहा आपको समझ में नहीं आ रहा है? मदीहा आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है ना, ठीक। ओके, टेल मी हाउ मेनी टर्मिनल कार्बन्स कैन बी देयर, हाउ मेनी लास्ट कार्बन्स कैन बी देयर इन अ फंक्शन, इन अ कंपाउंड। हाउ मेनी? आवाज नहीं आ रही है। फायजा, टेल मी हाउ मेनी लास्ट कार्बन एटम्स कैन बी देयर इन अ कंपाउंड। यस फायजा। नो आइडिया। शावेज, Yes, sir. how many terminal carbons can be there in a compound? By saying only two. नहीं, देखिए यहाँ पे बताइए how many terminal carbon atoms? देखिए इस कार्बन के बाद कोई और कार्बन है? One is the last carbon atom. Yes or no? Please tell me. हाँ या ना? करेक्ट है गाइस? वन हो गया, उसी तरह से आपके पास 5 हो गया। 5 इज ऑल्सो लास्ट कार्बन एटम। yes or no? करेक्ट है? हाँ या ना बोले। सिमिलरली 6 इज ऑल्सो लास्ट कार्बन एटम। 6 के बाद कोई और कार्बन है? Is there any other carbon atom after 6? Tell me guys. No, na? ठीक है। All of you understood what is terminal carbon atom? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक। Now after this you are going to write next point. In case of tie. Sir, Yes, tell me. the maximum number of terminal carbons is 4, right? Maximum number of terminal carbons 4 नहीं ना। कितने टर्मिनल कार्बन हो गए? Okay. कुछ भी हो सकता है ना? Can be anything, depends on the compound. In case of a tie, that means when you are numbering and there is a tie, okay, there is a tie. In case of tie, lowest locant rule is used. And if there is a tie, then we number according to alphabetical order. ठीक है, क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज यू हैव अ साइक्लिक रिंग लाइक दिस, 6 कार्बन। यहाँ पे आपके पास क्या है? हियर यू हैव क्लोरीन एंड हियर यू हैव ब्रोमीन।
So there are only two ways in which you can number this thing. You can either number it 1, 1 and 2, और हम green से कर सकते हैं क्या 1, 2. अब देखिए कुछ भी कर लीजिए आप लोग, no matter what you are going to do, 1 और 2 ही हो रहा है, तो किसको 1 देंगे किसको 2 देंगे in this case. Then alphabetical order के हिसाब से ब्रोमीन पहले आता तो ब्रोमीन को 1 मिलेगा और क्लोरीन को 2 मिल जाएगा. Got this guys? Yes, no, please tell me. समझ में आई बात? Yes, sir. बस तो मेन मोटा अगर हम बात करें आईयूपैक नोमेनक्लेचर की, तो यही है आईयूपैक नोमेनक्लेचर. अब हम लोग ट्राई करते हैं. वी आर गोइंग टू अप्लाई द स्पफ वाला रूल ऑन टू द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव सीन. If anyone wants to write anything, let me know. I will scroll up, I will scroll down, whatever you say. Yes, sir. Can you scroll up How much up? from Tell the me. spot till down? अच्छा, From the table till down. till down. एक कर लिखिएगा ना, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा. लिख लीजिए. आराम से लिखिए, बिल्कुल समझ के. कहीं अगर डाउट आ रहा है तो फिर प्लीज बताइए. रवा, आपने तो वीडियो देखा हुआ था ना, आया ना, बताएं. Yes, sir. फिर आपने प्रैक्टिस नहीं किया था. Hmm. I नहीं saw किया the था ना. videos. You saw the videos, only saw the videos, है ना. Let me know if I have to scroll down.
Let me know if I have to scroll down. What happened, guys? Done? Not done? Still writing? That's बोल के फिर से बोल रही हूँ. So I write next these things. Let me know if you're done, guys. Please थोड़ा जल्दी लिखिए.
हो गया नहीं हुआ अभी तक? Minutes, sir. Anyone still writing? Please say yes. Is there anyone who's still writing? Please say yes. No. चलिए. Let's start with this. अच्छा यहाँ पे हमने कुछ ये नहीं दिया. My bad, guys. Here there should be an OH group. I think so. Okay, there will be an OH group. I forgot to write that. Okay, otherwise the valency of carbon is not satisfied. Now, carbon should have 4 bonds. So first of all, identify the functional group. Tell me what is the functional group here? OH. Yes. So for OH, what do we write? We write all. Correct? Now tell me, is there any unsaturation? Any double bond or triple bond? Any double bond or triple bond? So what do we write? What do we write, guys, if there is no double bond or triple bond? नहीं समझ में आया, प्लीज बताएं. शावेज आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है. फायजा, प्लीज टेल मी. Answer. Sir, Ian.
Thank you for waiting, guys. Am I audible properly? Yes. Oh. So we identified the functional group and unsaturation. Now, I was asking how many terminal carbons. I don't know what is happening with my internet today. It gets losing connection. ठीक है चलिए. आवाज आ रही है साफ? Am I audible? Okay, great. So I'm asking, the CH3 is a terminal carbon, yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay, so this is going to be 1. This is also a terminal carbon, no carbon after this. 3. Now C2H5 will be what? C2H5 is nothing, but it is actually CH2CH3. Right? So this will be the 4th carbon, which is terminal carbon. Correct, guys? Hi, Anna. Yes, sir. Now, which terminal carbon is nearest to the functional group? Tell me, guys. 1, 2, 3, 4. Which is nearest to the functional group? 3. 3, right? So we should include this one. Our parent should continue like this. To start from here, it is going to take this carbon atom, which is containing the OH. Now, when it goes to this carbon atom, here, now tell me where should we go? Up, down, or left? Is there any double bond? Is there any double bond? Yes or no? Please tell me, guys. Is there any double bond? No, sir. No. Is there any double bond? No. So we are going to go to the longest carbon chain because we have already taken care of the OH group. Yeah? So how many carbons? 1, 2, 3, 4, and 5 carbon atoms. So this is going to be pent. Now, substituent is anything that remains after the identification of puff. So what we have identified OH, and we have taken care of all of these 5 carbon atoms. What remains is this CH3. Sir, can you this again CH3. explain parent for this question? Parent. अरे माइक ऑन करके हाँ या ना तो बोले भाई, सवाल पूछ के चुप हो जाते हैं बच्चे. जो सवाल पूछता है वो माइक ऑन करके. हाँ, थैंक यू. Parent ना, ठीक है. You understand that I should start from this carbon atom. Keep your mic on, Rabba. Yes, sir. Okay, then I will move this way. Right? And after I get stuck onto this carbon atom, where should I move? I can move 3 ways. Na? I can go up, I can go down, I can go left also. I mean straight like this. इस तरह से भी जा सकते हैं. So how should I decide? So our deciding criteria is these 3. Here we have the deciding criteria. So अब बताइए यहाँ पे किसी भी कार्बन एटम में किधर भी जाएं आप, फंक्शनल ग्रुप मिलेगा आपको? Are you going to get any functional group? No. Any double bond? No. The longest chain. Longest chain. ठीक है ना? तो इस वजह से हम कहाँ जाएंगे? नीचे चले जाएंगे. Got this now? Yes, sir. ठीक है. So this is my carbon chain. So parent, and then whatever remains is substituent. That means whatever remains is CH3 and CH3. So we have 2 CH3 groups. So substituent is going to be dimethyl. Now when we number these things, तो अगर आपके पास dimethyl है तो आपको बताना पड़ेगा where are the 2 methyl groups. So yeah, the 2 methyl groups are on. अच्छा, numbering कर लेते हैं पहले. So if we number this, then we will start numbering from the carbon atom which is nearest to the functional group. So 1, 2, 3, 4, 5. Now the methyl is in 3 third carbon atom. So 3, 3 methyl.
dash. Then pent we don't have to number. There is no unsaturation, so we don't have to number any unsaturation. Double bond है ही नहीं. Functional group is in the second carbon atom. So 2 और लिख दिया आपने. The name is going to be 3,3. Dimethyl pentane 3 or. Got this? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, चलिए. आई होप यू हैव रिटन द सेकंड थर्ड वन. इसको ट्राई कर लीजिएगा. फोर्थ वाला देखिए जरा. इसको लिख लीजिए पहले. लेट मी नो वंस यू डन. आई विल वेट 5. अब बताइए जब भी हो जाए. आई विल वेट फॉर अ सेकंड एंड देन आई विल गो.